Next, a company has 20 employees, out of which X employees are clerk and rest are officers. X क्लर्क जो है वो X है, ऑफिसर्स जो है वो 20 माइनस X है. The average salary of all the employees in the company is 5300. The salary of an officer is 275 more. मतलब ये है 1/4. Officer is 15/4. ओके, तो ये 4x प्लस 300 माइनस 15x, 300 माइनस 11x is equal to 5300. ओके, गलत किया, उल्टा करना चाहिए. ऑफिसर की सैलरी बड़ी नहीं, पहले रखना चाहिए. माइनस 15x प्लस 4x is equal to 5300. Correct? Concept. The salary of an officer is more than the salary. 27500 is equal to 25 by 25, 25 4. More है मतलब 15/4. Of the clerk. Find the salary of the clerks of all the clerks together. If the number of officers in the company is 50% more, is 50% more than that of clerk. So 40 minus 2x is equal to 3x, 5x is equal to 40, x is equal to 8. तो अगर ये 8 है तो ये हो गए 12. Now, find the salary of all the clerks together. कितना इजी क्वेश्चन तो नहीं बताना. यहाँ तो x तक वैल्यू सीधी. ये है क्लर्क है 12 because we have 20 employees out of which x are clerk and the rest are officers, है ना. तो x का वैल्यू जो 8 आ गया तो वो है. नाउ हम इन दोनों की कंबाइंड सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ एवरेज में ही है. तो 32x प्लस 180x अपॉन 19 is equal to 5300. नाउ यहाँ पे 20 आए, 20. नाउ और कॉमन ले लिया. 8x प्लस 45x अपॉन 20, 1/5. 5 उधर चला गया तो 152650 अपॉन 53.
वन पार्ट इज इक्वल टू 500, ये जो है 2000, फाइंड द सैलरी ऑफ ऑल द क्लर्क्स टुगेदर। मतलब पर क्लर्क की सैलरी इज 2000, so it is 16,000. इतना टाइम लगेगा। Next. Worker saw a 20% boost in his hourly income and 10% decrease in his weekly income. So let hourly big income be X, H and weekly income be W. तो ये जो है वीकली इनकम क्या होता है, आर्ली इनकम। in his weekly working hours, hourly income भी X को 6/5, wait, the ratio से hourly and weekly होल्ड और रिव्यू का थे। 20% बूस्ट, तो पहले 5 थी अभी 6 पार्ट्स हो गई है। डिक्रीज मतलब पहले 10 पार्ट्स थे अभी 9 पार्ट्स है ना। तो ये है 1/2 और ये 2/3 रेशियो है, सेम ही रेशियो है ना। If what is the worker's new weekly wage if he was previously paid 1,500 per, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500, सो 500 और ये 1000, परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है 500, 6/5, ये 600, ये 3 है तो ये 900। तो what is the wage of the new workers? It is 1500, I think 1500. The worker's newly wage if he was previously paid rupees 1,500 per week. वीक कैसे बनता है, वीक बनता है 7 days। इसमें थोड़ा आया, यहाँ तक सही। इसके आगे क्या करें, तो means weekly workers, weekly working hours, weekly working hours, hourly इतना है, hourly इतना है। हाँ, और देखो, hourly is this much, hold on, hourly income and a decrease in his weekly income, weekly working hours, decrease in his weekly working hours, decrease in his weekly working hours, मतलब काम करने के लिए जो घंटे हैं वो कम हो गए हैं। ओके, सो अगर आर्ली उसको 5 रुपीज मिल रहा है assumption, और अगर वो 10 hours काम कर रहा है पर वीक, उसको 50 पार्ट्स का अमाउंट देना चाहिए जो है इक्वल टू 30। अभी उसने क्या किया है, अभी उसका भी बढ़ गया है, वो अभी जो है ये 150 था और ये 300।
1620. The population of a town is um, Kent. Uh, the population of a town is 89123. If the population is increased by 10% next year and decreased by in the next year after that, what will the population after 2 years? See, 2 multiply by 11 to 5 7 4 4 2 multiply by 3 15 1 2 2 14 1 13 1 7 7 3 4 2 5. Next, if 9 is added to 60% of the number, if 9 is added to 60% of the number, the result obtained is divide the result. The result obtained is divided by 3. The output is 643. तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 9 12 19 -9 तो 1920 अपॉन 3 इंटू 5 5 6 का 40 0 to 32. What is the number? 3200 is the number. Next, the Ramika spends 33.33% of her salary on traveling. On salary on traveling. Ramika spent 33.3% of her salary on traveling. और चलो इसका 1/3 होता है, इसका 1/8 होता है. तो लेफ्ट इज, तो अगर मैं सैलरी जो है 2400 कंसिडर तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा लेकिन 10 मिनट में आएगा आंसर. Spends 1/3 मतलब 2/3 she is left with. Then the remain from 125% of the remaining salary in on the electricity bill. तो ये गया, तो बाकी रिमेन इज 4 है ना. ये x समझ लो. 7 1 जा 7 7 3 जा 21 7 5 जा और 6 7 5. फिर अगर 24 इंटू 100 इसको कंसिडर करो तो 5 20 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 जा 25 5 4 जा 25 2 जा 7. अभी 3 8 जा 3 9 जा 3 8 8 कैंसिल हो गया. फिर ये जो है ये 3 और ये 4 इधर आ गया तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया. व्हाट इज हर सैलरी. और सैलरी फिर इधर इसको 240 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बराबर 108 मल्टीप्लाई बाय 24. 24 8 जा 192 तो 91 24 25 0 0. हेलो हेलो क्या करते हैं. दीदी ये लोग बोलते हैं मुंगे येणार आहे आव्हान हाँ हाँ तुम्ही कुठे राहता. हॅलो
अवांत मध्येच राहते. दुसरीकडे म्हणजे तिथेच राहते ना, एरियात आहे ना. हा, तर मग तुझ्या आई वडिलांचं फक्त इलेक्शन आयडी नंबर कधी मिळेल ना तुला फोन करून गावी. हा, इलेक्शन आयडी नंबर घे. हा, आणि त्यांना इलेक्शन कार्ड त्यांचं व्हॉट्सअप करायला by 7 by 8 is मिळालं तर ठीक आहे. 9450. मग इथून तू प्रिंट काढून घेशील ना. 2 multiply by 7 into आणि 3 आईचं by पण वोटर आयडी घे. वोटर आयडी 2 is a 4, 2 तेवढं घेऊन ठेव. आणि लग्न झाल्यानंतर ते मला दे. 0 1350 into 12. मॅरेज सर्टिफिकेट दे आणि आई वडिलांची आई वडिलांचं ID card दे. In an examination, 20% of the total number of students didn't write the exam. 10% of the students who wrote the exam failed. Did not write 1 by 5, 4 by 5, out of which failed, and what percent passed the exam? मग घरी दुसरं कोण आहे का? असतात ना, मग घरातले एक जण व्यक्ती कोणी येऊन फॉर्म भरला ना तरी चालेल. हा, कोणी एका व्यक्तीने येऊन फॉर्म भरला तरी चालेल. मग तुझ्या मिस्टरांचं इथे माझ्याकडे नाही मिळालं. पण तुझं माझ्याकडे आहे फॉर्म. The company has two divisions, division A and B. In a year 2020, 2022, the division A had the revenue of 1.5. If the total revenue of a company in 2020 was okay, a company has two divisions, A and B. In year 2020, division A had a revenue of 15 lakh. If the total revenue of the company in 2020 was 50 lakhs, तो इसका होगा 35 lakhs. What is the percentage of the revenue they contributed by? कुछ नहीं है। Next, a town has a literate population of 60%. Literate man outnumber literate women by the factor of 7 to 5. The number of illiterate men is 4 times the number of illiterate women. What percentage of men in the town are illiterate compared to the literate women? I think हम लोग properly ratio दिया है, but in words. The town has literate populace of 60%. तो अगर 100x टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से 60x जो है वो लिटरेट है और 40x जो है वो इलिटरेट है. सो आउट ऑफ दिस लिटरेट पीपल, मेन और फीमेल जो है लिटरेट आउट नंबर लिटरेट वुमेन बाय द फैक्टर ऑफ 7 to 5. चलो, अगर समझो ऐसे अज्यूम कर लीजिए, नंबर ऑफ इलिटरेट जो है मैन और फीमेल जो है वो है, illiterate man is 4 times that of illiterate women. What percentage is the town illiterate? What percentage of men in the town is illiterate? 3, 5, 8, 32.
compared to the number of literate women. Compared to the number of literate women. 128. See, and the ratio दिया है but words में. The student got 72% in an exam which has 4 subjects. He got 80% marks in the first, 60% second, 75% at third. If each subject has equal maximum marks, find how many marks he got out of 150 in the fourth subject. एक second. If each subject has equal maximum marks, if each subject मतलब फोर्थ सब्जेक्ट अगर 150 है तो ये बाकी सारे भी 150 ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है. तो अगर उसको x मार्क्स मिले हैं 150 आउट ऑफ 100 करके अगर उसको 80% मिला है फर्स्ट सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे 3/2, तो ये 80 अपॉन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 40, तो उसको आ गया है 120 मार्क्स. ये वैसे ही 80 अपॉन, अब उसी सेकेंड में इतने आए हैं 60 30 मतलब 90 प्लस 75 अपॉन 2 इंटू 3. इतने मार्क्स आए हैं प्लस x बस फोर्थ सब्जेक्ट विच इज इक्वल टू, अगर 72% सारे मिला के 4 सब्जेक्ट्स में आए हैं तो वो सारे 4 सब्जेक्ट को x 150 इंटू 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 72%. वो यहाँ पे 3/2, 2/2 यहाँ पे आ जाएंगे 6, 12, 4, 3. So 4, 3, 2 minus 3, 2, 2.0, 10, 5, 11, 9, 2, 0, 1, 0.5. Next. Sindhu and Tanya save for 10% of their total income. Sindhu and Tanya save 12% of their total income. If the total savings of Sindhu and Tanya is 40,000 and the income of Tanya is 40% less than that of Sindhu, so 3x into saves 10% of their total income. Total income 8x है, उसका 1/10 सेव करते हैं विच इज इक्वल टू 14,000. तो x is equal to 14,1,2,3,4 multiplied by 8. What is the income of Tanya into 3? ये lakhs में आ रहा है. Each नहीं देना ना, each Sindhu and Tanya save. Each saved, if it is written each saved, so it will have been much more easier. Or Tanya income is 2/5 less than 3/5. What is the income of Tanya?
What is the income of तानिया? अगर इसका मैंने 1/10 सी, तो इसका मैंने 1/10 सी, 3x/10 प्लस 1/2 x को यही कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं, तो वही आएगा। इफ द टोटल सेविंग इज 14,000 और 8x/10 इज इक्वल टू 1412, है ना? तो ये 10 बचा है, 4/5, x इज इक्वल टू 70,000 अपॉन 4। 4 1 4, 4 7 5 0 0 multiplied by 3, 0 0 between 1 2 to 5 5 to 5, अरे तो गलत कहाँ किया? शायद ये काम किया। The Rohan spent 35% of his income on traveling, 30% of the remaining on shopping. 7/20 में से 13/20 बचा, remaining 20% on shopping. No, 4/5, and the remaining amount left with Rohan is 42,000. So 13 3s are 39, 52, 34, 14, 4 8 to 85, 5 into 20, 5 to 4 to into 20 equal to 0, 10, 5, 8. Find the income of a woman in 500, when a number is increased by 55%, the number obtained is, if the number is increased by 55%, the number obtained is 63 less than twice the original number. ठीक है, 31 20 40, 40 minus 31 is 9x, 63, x is equal to 7. Find the 2/7 of the original number. Original number x से रखा तो let the number be x and that number is increased by 55%. The number obtained is 63 less. So 155/100 x. 31 20. The number obtained is 63 less than twice the original number. अभी यहाँ पे 31x is equal to, okay, understood. Let's take that. 40x minus 0,612. तो यहाँ पे 260 is equal to 9x, 9 1 से 9, 9 1 40 is equal to x. तो इसका 2/7 is 40. मैंने कहा कि मैंने मल्टीप्लाई किया। A monthly salary of A is 25%, 20% more than B. If the savings of A is 24,000, which is 40% monthly salary of A, which is 40% of the monthly salary of A. So ये एक्स्ट्रा आइडेंटिटी 10,000. So उसका salary is 60,000. So if this is 60,000, this becomes 15,000.
Then find the monthly salary of B, it is 50,000. Next, income of A is 83 1 by 3 is 250 upon 300 1 5 by 6 5 by 6 remember 80 becomes 80 to 5 by 6. The income of A is 5 by 6 of B and the income of C is 160 which is 8 by 5 is 8 by 5 of A. 8 by 5 of A. In 5 already have now taken if the combined salary of A, B, C is 45600 1119, and then what is the income of B? 45 to 38 15 76 42400 multiplied by 6 is equal to 14400. Next, the salary of A is 3 by 8 of the total salary of A and B. तो B का जो रेशियो है B की सैलरी जो है वो है 5 पार्ट्स ये अगर ये 3 पार्ट्स है and B saves 60% of his salary and total savings of A and B together is 50% of their total income. B saves 60% of his salary and total savings of A is A and B is savings. Okay, तो इसको मैंने 500 ले लिया इसको मैंने 500 इसके सेविंग्स कितने हैं x 50 into 3 by 5 मतलब सेविंग्स जो है वो 300x बी के और दोनों की जो टोटल सैलरी है टोटल सेविंग्स ऑफ ए एंड बी इज 50% 400x मतलब ये है 100x. The average expenditure which is यहाँ पे 200x यहाँ पे भी 200x. So average salary which is 200x is equal to 1600. So x is equal to 80. What is the total salary of A and B? 80 is equal to 64183. And the population of the village decreases by 18.88%, which is 2 by 11, 9 by 11. And the present population is 464,860. घरी में कशाला मी भरून देते आणि तुम्हाला एक कॉपी देते ना मीच भरते फॉर्म पाहिजे मी